नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वर्ष के नए सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु बनाए गए वीडियो में। साथियों, इस वर्ष के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके लिए हमने गूगल की फ्री सेवाओं का उपयोग किया है और कोशिश की है कि पिछले वर्ष जितनी भी समस्याएं हुई हैं उनका समाधान आपको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आने का उद्देश्य भी यही है। साथ ही क्योंकि अभी तक हमें नई गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई हैं, इस कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इस सॉफ्टवेयर में होल्ड पर हैं, लेकिन इस स्तर पर सॉफ्टवेयर है कि आप इसका उपयोग अपने टर्म 1 के एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट में कर सकते हैं। वर्तमान में ये सभी गूगल शीट्स के थ्रू आपके पास उपलब्ध हैं। एक बार पूर्ण रूप से जब गाइडलाइंस हमें मिल जाएंगी तब इसके भी वेब पेजेस आपके पास उपलब्ध रहेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर के लिए जो लिंक आपको दी गई है, जो एक अलग से वेब पेज बनाया गया है, सभी जानकारी इस वेब पेज के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। अतः कभी ऐसी कोई समस्या हो तो एक बार वेब पेज को ज़रूर देख लें। कुछ ज़रूरी निर्देश और जो आवश्यक फाइल होती हैं वो इसमें उपलब्ध हैं। साथ ही अपडेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इसी वेब पेज के माध्यम से आपको प्रदान की जाएंगी। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें करना क्या है। सर्वप्रथम आप इस बात का ध्यान दें कि आपको अपने इस विद्यालय के लिए अपने लिए एक यूज़र आईडी एक्टिवेट करवानी होती है। उस एक्टिवेशन की प्रोसेस में आप जब वेब पेज को खोलेंगे, इस वेब पेज के खोलने पर सबसे ऊपर अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं तब आपको सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन 3 to 5 इस समय वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने विद्यालय के लिए यूज़र नंबर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। ये एम्बेडेड फॉर्म है, इसमें आप जो जानकारी भरेंगे ये डायरेक्टली पोर्टल तक पहुँचती है। वहाँ से आपके विद्यालय के लिए यूज़र आईडी जनरेट हो जाती है। साथियों, इसका पासवर्ड आपको तुरंत रजिस्टर्ड मेल में, जो मेल आप यहाँ पर दर्ज करते हैं उसमें तुरंत मिल जाता है, जिसका उपयोग करके आप अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर पाएंगे। साथ ही ये जो यूज़र आईडी और ये जो पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा, यह यूज़र आईडी पासवर्ड अन्य सॉफ्टवेयर के लॉगिन में भी काम आएंगी। तो ये एक बार की प्रोसेस है जिसमें आपको अपने विद्यालय को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, हमारे पहले स्टेप्स क्या होंगे, उसके लिए अगर आप शुरुआत करें तो सबसे पहले आपने अपने यूज़र के लिए एक्टिवेशन के लिए आपने गूगल फॉर्म सबमिट किया। क्योंकि हम गूगल की फ्री सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो लगभग इसमें कुछ समय लग जाता है। तब तक आप अपने विद्यालय के रिज़ल्ट के लिए अपनी कक्षाओं का बायोडेटा या स्टूडेंट्स प्रोफाइल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इसी वेब पेज के ऊपर यहाँ पर कॉमन फाइल्स एंड लिंक्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर यूज़र मैनुअल भी है, बायोडेटा टेम्पलेट है और इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेम्पलेट फाइल है। ये 3 फाइलें वर्तमान में चलाई जा रही हैं जो आपको सुविधा प्रदान करने के लिए रखी गई हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, बायोडेटा टेम्पलेट फाइल को अपनी ड्राइव पे किसी फोल्डर में कॉपी कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे कॉपी करने के लिए बोलेगा, कॉपी डॉक्यूमेंट। यू हैव टू क्लिक ऑन मेक अ कॉपी। Now the copy of biodata templates open in your drive. Remember, you have to share this sheets link to your class teachers. आपको इस शीट का लिंक क्लास टीचर से शेयर करना है। They have to prepare the students biodata profile in separate tabs for their own class. यहाँ पर जब आप इस छोटे से डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, whenever you click here you will get the duplicate option. Duplicate means creating the new copy of this same tab. So you have to just rename it. For example, second B, then just write class 2B, and in the same way number of sections if you have, then you can also increase these tabs. And each class teacher have to fill their students information, their class and section number, roll number of the student which is allotted to the student,
admission number, student's name, student's category, their all information to be filled here. If in the mid of session student get transferred, you have to mark here TC issued status to no. And if in the mid year student get transferred, you have to mark it yes, otherwise it is to be no. TC number, and if you have school number of a new school, if he is going to a KV where the same software is used, you have to mark the school number. Or this is for the purpose of importing data of the student in case of TC. यहाँ यदि कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाता है और ऐसे विद्यालय में जाता है जहाँ पर यही सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तब हम यहाँ पर यदि उस विद्यालय की यूज़र नंबर को एंटर कर दें, या फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा आता है, उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि आप उस बच्चे का डेटा अपने सिस्टम में इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकेंगे। आपको फिर से किसी तरह की मार्क्स एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मॉड्यूल थोड़े दिनों बाद एक्टिवेट हो जाएगा, अभी फ़िलहाल ये होल्ड पर है। You can also enter UBI student ID and another field that is here, the fees defaulters mark. Whenever this information is filled, class information completely filled by you and your friends, and for that purpose इस शीट में साथ में इस बात का भी ध्यान देना है कि ये जिस जगह मौजूद हो उसे आप शेयर ड्राइव में ज़रूर रखें। फॉर एग्जाम्पल KV trial, I renamed it, and it is in your own main drive. You have to move it in a shared folder or make it share to all the persons. For example, from here we have a sharing tab, this side. This is the share and it is restricted now. You have to make it anyone on with the link, because sometime it may be possible that many people have different mail IDs and they are trying to edit it. Make it editable. Then just copy the link and send it through the WhatsApp or any other media. That's done. Now the second part, what we have to do. When this work is completed, then here another module for you, import data template file, means the biodata which is made by teachers with this file. Here all the classes are there, the data is here. इन सभी टैब्स के डेटा को एक साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपके लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए ये फाइल इंपॉर्टेंट है। You have to click here to make a copy of import data from template file. Again it will ask to make a copy it. Now this panel will be there, import data control. Here two options are there. Import data sheet, we are now importing biodata only, then we have to import biodata. And URL of the file to import. The URL means the address of the biodata file of your KV. This is the file which is created by your teachers. They have filled the biodata. Copy this complete URL from here from the address bar, copy it, open the import file, just clear this path from here and then paste here. Just click on this import data. You will see running script message will be there. Sometime it may ask to allow the permissions. You have to give the permissions. It will ask to continue. Click continue.
advanced, go to import data, make it allow, just recheck. When the work is finished, you will see your biodata is imported in this biodata sheet. Now your complete biodata of your Vidyalaya is ready to import in your main software. Now you have to log in to your Vidyalaya using the user ID which is generated and the password which is sent by the mail. Here school login is there, you have to log in here. Now here, for example, your KV code, this is one. See, you will get your KV code, shift code, your user number. This is the user number which is essential for the complete working of your data. User number, and this is the link to open for the class 3 to 5. Click on this link. With this link you have got the access of the software. For example 1211 is a user ID to me for running trial softwares. It will take some time, depends on the internet speed. Let's watch some other fields. Here green fields you have to fill your UDICE number, your CBSE affiliation number, your website, your email, and date of result and commencement of new session. All these information will be fetched from the database which is created. Second sheet is the signature sheet. In this signature sheet you have to just mention some information which may be required for report card printing. And later on stage I will explain how you can add signature strip if you are interested in it. Just name of the principal, in charge principal if he or she is present in Vidyalaya, and all these information you have to fill. Whatever you want to print in your report card you have to mention here. For example, the class teacher, class wise you have to mention up from class 3rd to 5th, as this is the software for class 3 to 5, and the same environment in class 1 and 2, and the same environment in 6 to 8 and even 9 and 11. You have to mention your user number. Actually it is already system feed formula is there, then class, then teacher and checker, and that will be also automatic, so no need to fill it. This class, teacher and checker's name will be there. Third one is the additional sheet. In additional sheet you have to mention your co-scholastic activity of Vidyalaya. 6 co-scholastic activities are there, you have to mention it. And another important thing is that additional subject, for example regional language, if you have, यदि आपके विद्यालय में रीजनल लैंग्वेज है तो आप उसे यहाँ से फिल कर सकते हैं, उसे आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा. अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है रीजनल लैंग्वेज के अलावा तो इन अदर सब्जेक्ट में, और उसका मार्क्स कितने मार्क्स का आप टेस्ट लेते हैं. फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स इज द स्टैंडर्ड मार्क्स which I have given here. This is the use of additional sheet. Third one is the biodata. This is the important factor of your software. Here what you have to do, just see the imported data which we have, just make the copy of this data from this sheet, whatever filled by your class teachers. Come down,
copy this data, open your software. This is the trial kill result software. Just paste here. All students data is here now. What you have to do, just write your school number here with all the students, because that user number, school user number, will enable the central server to locate these students. Second one is the serial number. That is the unique number of the student in your school. In whole year, this unique number cannot be changed. If any new admission is there, then class teacher have to inform or to take the help of the examination department to include that student in new row. Means in case of new admission, you have to make data entry through examination department, and all marks entries to be done as per that serial number. So class teacher have to take care of it. They have to enter the marks as per this serial number. इसके बाद आपका बायोडेटा रेडी रहेगा. न्यू एडमिशन की एंट्री आपको सेपरेट यहाँ से करनी पड़ेगी. टीसी मार्क आपको यहीं से लगाना पड़ेगा. मींस जो भी स्टूडेंट का टीसी हो जाए, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था. जिस बच्चे का टीसी हो जाए, आपको यहाँ पर उसका टीसी फ्लैग लगाना पड़ेगा. यहाँ टीसी फ्लैग लगाने से ये डेटा एनेबल हो जाएगा कि वो आपके रिकॉर्ड में नहीं है. सेकेंडली, यहाँ टीसी फ्लैग लगाने से इस स्टूडेंट की जितनी डिटेल्स हैं, चाहे वो बायोडेटा हो और मार्क्स हो, वो एक सेपरेट डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती हैं, जहाँ से यदि सेम सॉफ्टवेयर यूज़र के भी अब उस बच्चे को लोकेट करना चाहे तो लोकेट कर सकता है. आपके यूज़र स्कूल यूज़र नंबर की हेल्प से वो अपने विद्यालय में इस बच्चे को मैप कर सकता है. मीन्स इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द डेटा ऑफ टू डिफरेंट स्कूल्स. फ्रेंड्स, बायोडेटा इंपोर्ट के बाद डेटा एंट्री करना है. तो मार्क्स एंट्री टर्म 1, यदि आप ओल्ड पैटर्न अडॉप्ट किए हुए हैं, जहाँ पर 40 मार्क्स का पीरियडिक टेस्ट और 80 मार्क्स का हाफ ईयरली हुआ करता था, आप इस शीट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं. पीरियडिक टेस्ट एंड मिड टर्म एंड नोटबुक सबमिशन एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट मार्क्स फॉर टर्म 1. यदि आप लास्ट ईयर की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 10 मार्क्स का ओरल, 30 मार्क्स का रिटन एंड ओरल रिटन MDP इन मिड टर्म, then you can use annexer marks term 1 or term 2 sheets. New method, annexer marks term 1, old method, marks entry term 1. After that, one of the important tool, that is the printing of report card. This sheet gives you or enables you to create the report cards online using the system. Here two information you have to provide. दो जानकारी यहाँ पर ज़रूरी है. पहला है पेरेंट फोल्डर ID, सेकंड सब फोल्डर नेम. सब फोल्डर नेम में भी द क्लास फॉर विच यू आर क्रिएटिंग रिपोर्ट कार्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग report card for class 5A, and I have to write the class 5A here, and this is the parent folder ID. This is one of the important information which is given to the software to print the report card. Report card format is in this final RC. The student's information, all things are there. Serial number of the student. With the help of this serial number, you can also change the student information as per that biodata. Here two buttons are also there that can also be used to move forward and backward to change the report card. These are two buttons. Sometimes it may also ask for allowing to use the services of Google. You have to allow it.
these keys are using. Here you will get teacher's name and signature all as per the signatures information you have given there. As nothing, no marks are there, so this is the blank report card. For printing this, you have to go to the print CTRL sheet. Here this is the control for printing the report card. Now see how you can get this parent folder ID. Parent folder ID actually the examination department's folder where all classes report cards to be kept. For example, for term 1 and for term 2 they can make their separate folders. In your Google Drive, whenever you open any folder, it is to be shared folder actually. Whenever you are going to print report card, then right click the folder and share it to everyone with the link. That is done. Open that particular folder, come to URL. See, this is the complete URL. There is no need to copy the complete address. URL पूरा हमें नहीं लेना है, इस एड्रेस को पूरा नहीं लेना है. सिलेक्ट करें लास्ट से लेकर बिफोर दिस स्लैश ऑफ फोल्डर के पहले के स्लैश तक का जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट करें, इसे कॉपी कर लें आइदर राइट क्लिक और बाय कंट्रोल C. कम टू द सॉफ्टवेयर. Here remove old one and right click and paste the new one. Now here starting serial number means from biodata from which serial number you have to print the report card. For example, from serial number 1 and 2 reports card I have to print, means serial number 1 and serial number 2 reports card I have to print. I have to mention the serial number, starting serial number and number of report cards I have to print. साथियों, साथ ही यह भी बताना चाहूँगा क्योंकि हम इंटरनेट सेवा का उपयोग इस सब में कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बल्क में यदि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया 500, आई एम गिविंग कमांड फ्रॉम सीरियल नंबर टू 500, तो इंटरनेट स्पीड कई बार यहाँ पर अफेक्ट कर सकती है और आपको हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज देखने मिल जाएं. ऐसे में आप ध्यान नहीं कर पाएंगे कि आपने किस सीरियल नंबर तक का प्रिंट कर लिया. तो इट इज़ बेटर टू प्रिंट क्लास वाइज एंड इवन फॉर क्लास वाइज जस्ट प्रिंट इन अ ब्लॉक ऑफ 10, 12, 20 रिपोर्ट कार्ड. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग कमांड फॉर 10 रिपोर्ट कार्ड. Finished script means your report cards has been printed. For class 3rd A हमने जिस फोल्डर में किया था वहाँ पर क्लास 3rd A का फोल्डर बन गया. इसके अंदर 2 रिपोर्ट कार्ड भी आ गए. सीरियल नंबर 1 this is the serial number 1 report card and this is serial number 2 report card. This is rough, that's why it seems like this. Now move to this folder. You can see that class 3rd A folder is there and report cards also there. So this is the process of making a report card. Now you can print report cards from this folder, and I am also sharing a tool to consolidate that report card in a single file and directly download that file or give it print command individually or the page wise. That depends on the examination department or Vidyalaya how they are printing the report cards. Promotion sheet, this is also required in your schools. Just change the class from this drop down and particular students information will be there, and it is to be printed directly by control P command or by your printer. This is the result analysis part. Change the class and section from here. This is all
about the software till now. Regarding printing, all doubts I think so clear. These are asked by the users, how can we print the report cards. यदि रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने हैं तो उसका या तो इंडिविजुअल प्रिंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कई लिंक्स हैं जिसमें आप ड्राइव के जितनी PDF हैं उनको एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ऑफलाइन टूल चाहिए है तो उसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वेब पेज पर अवेलेबल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और किसी सहायता के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे मेरा मेल ID आपके पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। इसकी हेल्प से आप जो भी अदर रिक्वायर्ड हेल्प हो वो ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।